Hello everyone, myself Ravi Roshan Kumar Chaudhary, PhD, NIT Patna. Today I have discussed on topic computer network. Computer network is a very important role of the computer science. Computer network is a data communications to device. It is communicate to by help of the Bluetooth, wireless sensor network and computer network device. So today I have discussed two hundred points, 150 points discuss this is topic. Firstly, O open source network, OSI. OSI means full form open source network. TCP transport control protocol, IP internet protocol. देखिए this is the 7 layer. this is देखिए OSI मॉडल जो होता है ना वो 7 लेयर होता है. OSI मॉडल इज ए 7 लेयर. फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, presentation layer and applications layer. The physical layer is a hub, repeaters. Data link layer is a backup part of the physical layer, and the network layer is a communicating. It is example of the IPv6 and IPv4 and protocol, and device is a router. It is a very important role. Host, network host and independent class, network ID, count net number and socket address, IP address plus MAC address, physical address, 7 point of the physical address, so main memory, and virtual address, secondary memory. Ethernet address, this is the Ethernet address. First, this is the IP, मतलब TCP. तो TCP is a 7 layer, ठीक है. मतलब TCP is 7 layer. 2 layer is the remove session and presentation, मतलब 5 layer. तो this is the 5 layer की बात हो रही है. OSI मॉडल 7 layer, ठीक है. दिस इज द एप्लीकेशन लेयर, presentations layer, session layer, transport layer, network layer, and data link layer, and last physical layer. This is the device using of the, this is the gateway, band to band. This is the band to band application layer की बात हो रही है. and this is the data transmissions of the message. This is the 7 layer 7, ठीक है. This is the physical layer. This is the hub repeater. This is the same. This is the LAN. Hub is a LAN, or repeater is a also LAN, but repeater and hub is different is a similar network, but this is the same network. This is the LAN to LAN, the LAN to LAN difference. This is the data, मतलब message is the data, and layer 1. This is the all process. This is the data link layer. So use of the switch and bridge, and bridge. This is the switch is a band, LAN and LAN, but different. This is the frame. And layer 2, network layer. So network layer is a
This is the device router and layer 3 and protocol IPv4 IPv6 protocols name, all property and transport layer TCP UDP, all concept is cover and layer 4. So this is a USI model, OSI model. This is a, so this is the first one, OSI model, and second ones of the TCP, the TCP transport control protocol. So this is a transport protocol. Transport protocol is very important role. This is the, this is TCP discussions. So this transport protocols have the lots of the जैसे TCP, पहले तो है TCP IP मॉडल जिस 5 लेयर applications layer, transport layer, network layer, data link layer, and last of the physical layer. This is the figure of the transport layer is a header file, header. This is the TCP header 20 and this is source and destinations, source address, source and destination 16 byte headers is 20 and source 16 byte 20 bytes. The HLAN header LAN 4 और चार byte. This is a 4 bytes. So many figures is a clears. F by S, S by S, SCK. So all out the 1 byte. And X don't cares is a 16 bits. Checksum is also 16 byte destination source. So this is a very important role. Without this is TCP IP model is very important role. There it is a properties of the checksums with this is a using TCP IP models is very important roles. The TCP IP is cont properties. This is cont
This is mainly this formula. This is these figures. Source, port, destination, port. So this is 16. This is 16. 0 से 15, 16 से 31. Sequence number. Acknowledgement number. This is a 32 bit. 32. फिर है this is a 2 point option and padding. Option plus padding. Checksum. Data offset reserved. This is a Windows have the 16. Data offset and reserved. देखो data offset हेलन दोनों एक ही नाम है, वो 4 होता है. कंट्रोल फ्लैग्स 6. दिस इज ए कंट्रोल फ्लैग में ही बहुत सारा पॉइंट है. URG, PSH, RST, YSN, FIN. URG अर्जेंट पॉइंटर, PSK पुश डेटा, RST रीसेट कनेक्शन, YSC सिंक्रोनाइज सीक्वेंस, FINAC टाइमलेट. विंडोज चार्ट 16 checksum 16 urgent pointer 16 and options 14 byte of the informations. This is a very important of TCP. And another point of the flow control of the properties is very important role. Flow control the properties is very important role. TCP flow control is present here. Data connection is present here. Error control is present. Checksum is present, and also TCP is lots of the points of TCP. Very important of the questions. TCP is a header. First TCP में first is a dynamic header 20 से 16 byte dynamic header. Second point is the flow control is available. Flow control is a 3 type. So stop and wait, go back, and selective ARQ is available in TCP process. This is all operation TT transmission time, propagation time, round trip time, throughput, utilization link, everyone is the TCP UDP. Checksum is a mandatory. This is a error control. This is a checksum is mandatory. Checksum is a mandatory. Error control is available regions because message is long. It is a 4 points. TCP with IP is connection oriented. TCP with IP
is connection oriented. It, oriented. It is also available applications layer, मतलब HTTP मतलब ट्रांसमिशंस में, SMTP, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, telnet is also available. Fifth, ICMP does not depend. ICMP. It does not depend on broadcasting and multicasting. It does not depend on broadcasting and multicasting. Broadcasting is a one broadcasting and multicasting. Broadcast means it is a 1 minute I will speak broadcast means. Broadcast is a one station to another stations, transfer of the data. Broadcast. And another of the multicast means ki one another one to one work and one system to differ of the another system. It's a part of the broadcast. Okay, and this is the TCP UDP connection oriented option padding is very important. HLN is very important. It's everywhere of the part, but only two point. So I will discuss another point. And IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल 32 बिट and 128 बिट, ठीक है. And this is a very important role. मतलब IPv4 देखिए today I have discussions another point of the IPv6 discuss IPv4 मतलब IP address discuss of the 20 line. First lines IP address from internet protocol. This is a IPv4 and IPv6. This is a version 4, version 6. This is the IPv4 is traditions and IPv6 is a research area. This is a 32 bit. This is the class 5, class A, class B, class C, class D, class E. And IPv4 is a IP address is a dotted and decimal and binary decimals. This is a 8 bit. This is a decimals and this is a binary 8 2 3. This is a binary and this is a 8888. So this is a 32 bit. And another one IPv6 is a class A is a subnet मतलब net ID and a host ID. This is a comparison of the host ID and network ID and identifications. So this is a identification is a 0, starting of the first bit of the 0, and net ID of the class ID to the power 20 to the power. This is a 8 and host is a
-2, and this is a 24, and this is a 0 1 0. So this is a 20 16 1 2. This is a 16. This is a C. This is a B C 1 1 0 0 1 1. This is the identifications of the host ID, number of host ID. Another points of the this is a all point of the given that in the point. Okay, and this is a point also. This is a host. The host network last hint. ठीक है, this is an identifications of the zero and indicates class A to E. Zero is a host, ठीक है, and network ID count net number class A से 32 bit in socket address. तो IP address plus MAC address. This is a called socket address. Both layer. IP address is a network layer. A MAC address is a physical layer and also data link layer. This is a switch is working of the MAC address. Physical address is a main memory, is comparison of the memory. So physical address is a main memory and virtual address is a secondary address, and thereafter the Ethernet address. So this is a logical address. Thereafter I will decide MAC address. So MAC address multiple access control address. It is a device ID. This is a 48 bit and this is a identifications. And internet to MAC address and IP address means this is a any network is a in network ID and IP address and MAC address is a counting any networks and protocols. Address tells of the protocol. Protocols names have the so many protocol: HTTP, TCP, BGP, RFIP, UDP, FTP, SMTP, and IP. Sequence of the HTTP. So HTTP is a hypertext transfer protocol. HTTP is a port number is a 80. HTTP is a two address and Yahoo and Yahoo.com. The first self and another transfer. FTP file transfer protocol. Data communication communicate node more than 1 2. Router network device data link layer. Bridge network device network layer. Hub network device physical layer. Repeater network device physical layer. Gateway this is a transport layer. Switch network device topology. Switch is a topology. Ethernet network device and switch is also switch is not topology. Ethernet is a LAN protocol. It is an example of 802.5. This is a project ID. IEEE is a project Computer Science Society. Project name 801.5. LAN full form local area network. BAN full form wide area network. MAN metropolitan area network. देखिए LAN is a small range is a cover. It is like of the office and university campus. LAN is part of the canonical channel and share channel या stations link. And BAN is a wide area network. It is cover of the all of the world. It is a America to India to BAN communications. And MAN is it is range of the 20 kilometer. It is a all one network. It cover of the all everywhere. And data is a physical layer. Frame data link layer. Package network layer. Segment
दिस इज ए डेटा फिजिकल लेयर में डेटा मीन्स डेटा, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम, नेटवर्क लेयर में पैकेज, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट एंड मैसेज। तो दिस इज ए डेटा, सेशन लेयर फिजिकल लेयर एंड एप्लीकेशन, सेमेंटिक रूल प्रेजेंटेशन लेयर में, सिंटैक्स रूल्स एंड सेशन लेयर्स में। अच्छा, सिंप्लेक्स वन डायरेक्शन डेटा ट्रांसफर, डुप्लेक्स बोथ डायरेक्शन ट्रांसफर एट ए प्रोटोकॉल, हाफ डुप्लेक्स तो बोथ डायरेक्शन डेटा ट्रांसफर नंबर ऑफ टाइम्स, क्लोसिकल बायर वेरी फास्ट। एंड देखिए क्या होता है, जैसे ये दिस इज ए आई विल स्पीक द ओएसआई मॉडल, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे आई टुडे आई हैव डिस्कशन, दिस इज नॉट कंफ्यूज, ओके। दिस इज ए डिवाइस नेम ऑफ द सिक्स, have repeater I will OSI model is also discuss, okay। देखिए this is a applications layer, ठीक है। तो applications level today I have not talking, तो applications layer as a part I will discuss, okay। on device, तो device is very less things, okay, and no problems। and today I have discussed OSI model in device and line when man. So this is a today discuss and frame. So this is a OSI model part. Okay, and this is a rule and syntax. So this is a protocol. Semantic and syntax is a protocol, and this is a simplex. To simplex one direction to another direction. Simplex and duplex is a both direction, and half duplex is a half duplex means both direction data transfer number of time, ठीक है। मतलब एक ही टाइम में एट ए टाइम ट्रांसफर होता हो। अच्छा, डुप्लेक्स में है कि एट ए टाइम होता है, अगर होता है कि नो ऑफ टाइम, मतलब अलग अलग टाइम पे होता है हाफ डुप्लेक्स में, ठीक है। क्लोसिकल वायर वेरी फास्ट 10^6 ms, ब्लूटूथ वायरलेस डेटा ट्रांसफर 25 मीटर्स, वाईफाई वायरलेस डेटा ट्रांसफर 40 मीटर, एल टी ई मीन्स वाईफाई एंड 4G में यूज होता है। कभी कभी आप मोबाइल्स यू कैन सीन मोबाइल LTE जियो LTE, दिस इज ए वेरी फेमस, ओके। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो देखिए ये हमारा, इसी में हमें पढ़ना क्या है, TT मीन्स क्या होता है, डेटा साइज बटा बैंडविड्थ पढ़ना है, प्रोपागेशन टाइम भी पढ़ना है इसी में हमें, ठीक है। वेलोसिटी, ठीक है। डेटा साइज आई लेंथ मतलब वेलोसिटी, RTT मतलब टोटल टाइम, ठीक है। फिर थ्रूपुट, तो ये तीनों में पढ़ना है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स ये इसमें पढ़ना है, इसमें, ठीक है। ये तो इजी पे था। और वायर के बारे में, इसमें इसका कितना रेंज होता है, इसका होता है 1 किलोमीटर में, हाँ, इसका 1 MBP/सेकंड होता है क्लोसिकल वायर में। और बहुत सारा इसका प्रॉपर्टीज है क्लोसिकल वायर का भी। क्लोसिकल वायर में क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो बता देते हैं आपको। क्लोसिकल वायर में प्रॉपर्टीज हमारा क्या है, जान लीजिए। देखिए क्लोसिकल वायर, देखिए वायर हम बतलाते हैं, एक शॉर्ट में बताए हुए हैं। वायर 4 तरह के होते हैं, ठीक है। और जो वायर होते हैं ना हमारा, देखिए वायर के बारे में बता रहे हैं। वायर जो होता है, जैसे देखिए ये वायर है हमारा, ठीक है। तो वायर एक हमारा वायर के ही बारे में बता रहे हैं, तो जान लीजिए एक ट्विस्ट पेयर वायर होता है, ठीक है, ट्विस्ट पेयर। और एक होता है हमारा वायर का नाम है क्लोसिकल होता है, बेसबैंड क्लोसिकल। एक होता है बेसबैंड कोशिकल कोशियल, एक ब्रॉड बैंड होता है, एक क्या होता है ब्रॉड बैंड क्लोसिकल होता है, कोशियल होता है। एक फाइबर होता है, एक क्या होता है फाइबर होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो देखिए सबका प्रॉपर्टी जान लीजिए, सभी का प्रॉपर्टीज है एक हमारा।
देखिए इसमें हमारा क्या होता है ना, देखिए सबसे पहले इसका हम पहले तो हम स्पीड जान लीजिए सभी का। इसका जो होता है ना स्पीड्स, तो देखिए ये सबसे ज़्यादा स्पीड होता है, ये 1 किलोमीटर, ये 1000 Mbps चलता है। और ये 1 किलोमीटर है ना तो ये कम चलेगा, 1 किलोमीटर है तो ये 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में 1 MB/सेकंड ही देता है, ठीक है। और ये बेसबैंड वायरलेस है ना, तो ये 1 किलोमीटर्स इज ए रेंज, मतलब थोड़ा स्पीड देता है, उसके मुकाबले 10 देता है, 10 Mbps देता है, और 100 Mbps देता है ब्रॉड बेस कोलोस्कल में, ठीक है। 100 MB/सेकंड, ठीक है। एक तो हुआ स्पीड रिलेटेड बताएं। अब आ जाइए, ये हुआ MB/सेकंड से, अब हुआ फ्रीक्वेंसी। देखिए हमारा एक, ये आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के सिग्नल होता है, एक डिजिटल क्या होता है, एक एनालॉग सिग्नल होता है, एनालॉग, और एक डिजिटल होता है, दो तरह का ही सिग्नल होता है। तो जो डिजिटल सिग्नल है ना वही MB/सेकंड बताता है, और ये है फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज में चलता है, ठीक है। ये हमारा क्या में चलता है, हर्ट्ज में चलता है, ठीक है। तो ये भी याद, तो ये आप जान लीजिए, ये 100 मीटर का काम करता है, ठीक है। 100 मीटर का ही काम करेगा, ज़्यादा इसका यूज नहीं हम करते हैं। और इसका रेंज जान लीजिए 1 किलो हर्ट्ज टू, ठीक है, 1 किलो हर्ट्ज टू कितना है, 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज होता है, ठीक है। और ये जो है ना ये 300 हर्ट्ज होता है, 300 मेगा हर्ट्ज ये प्रिपेयर करता है, ठीक है। और ये तो अनंत है यार, इसमें इसको तो बोल ही नहीं आप सकते, मतलब ये 5G ही एक तरह से फाइबर फ्रिक्वेंसी ही है। और देखिए दूसरा में सपोर्ट एनालॉग करता है नहीं करता, वो तो हो गया, बहुत सारा पॉइंट है। मतलब कि देखिए इसमें बोथ होता है, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल बोथ होता है, बोथ सिग्नल होता है इसमें। और ब्रॉडबैंड में क्या होता है, बोथ, इसमें भी बोथ सिग्नल होता है, ओके। एंड दिस इज ए, इसमें वन सिग्नल ओनली होता है, डिजिटल सिग्नल, ठीक है। इसमें डिजिटल ही होता है ओनली, ये भी में बोथ होता है, दोनों है, ये ओनली डिजिटल होता है, फाइबर ऑप्टिक्स में ओनली सिग्नल्स होता है, बहुत फास्ट होता है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज है सबका। तो हम मिनिमम 3 लेके चले हैं, ठीक है। अब आइए डायरेक्ट, तो आपको हम कहाँ से कहाँ लेके गए थे, यहाँ लेके गए थे, डायरेक्शंस की बात होते होते पहुँचा दिए थे, कोलोस्कल वायर के बारे में बताए थे। ब्लूटूथ तो आप जानते ही होंगे, जो हमारा ब्लूटूथ होता है मोबाइल में, ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, फिर वाईफाई भी कनेक्ट होता है, ये सब हमारा वायरलेस लैन है, ये हमारा लैन था, ये हमारा वायरलेस लैन है, ठीक है। वायरलेस लैन बोलते हैं इसको, वायरलेस लैन, ठीक है। अब आ जाइए वेट एंड स्टॉप टू पावर एन, देखिए ये हम पॉइंट पहले ही डिस्कस कर दिए थे, ये अब जब फ्लो कंट्रोल के अंदर में ही होता है। आप जानते हैं फ्लो कंट्रोल यार कि उसका फार्मूला दिए हुए हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन टाइम अभी हम बता रहे थे, उसका फार्मूला लिखे हुए हैं, ठीक है। तो रेंज कन्वर्ट MB, ट्रांसमिशन टाइम MB में ही कन्वर्ट करता है, ये बता रहा ट्रांसमिशन टाइम में। और बैंडविड्थ में इसका फार्मूला लिख दिए हैं, बैंडविड्थ बटा टाइम। देखिए बैंडविड्थ, जैसे एक फार्मूला बोल रहे थे ट्रांसमिशन टाइम, तो ट्रांसमिशन टाइम बटा क्या होता है, ट्रांसमिशन टाइम बटा होता है बैंडविड्थ, ऊपर में डेटा साइज, तो यही बैंडविड्थ हो गया, तो ये
ट्रांसमिशन टाइम होगा, ठीक है। अब मुझे राउंड ट्रिप तो टोटल टाइम होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन टाइम, प्रोपगेशन टाइम, लेकिन फुल टाइम होता है। मतलब इसको हम टोटल, एक डायरेक्शन इधर जाएगा, एक डायरेक्शन इधर आएगा, तो यहाँ एक ट्रांसमिशन टाइम, ये प्रोपगेशन टाइम एक, और यहाँ पे एक ट्रांसमिशन टाइम, तो ये 2 हो गया, और यहाँ प्रोपगेशन टाइम 2 हो गया, ठीक है। प्रोपगेशन टाइम थ्रूपुट है तो 50%, ट्रांसमिशन टाइम प्रोपगेशन टाइम बाई 2 हो गया। डीएनएस डोमेन नेम सर्वर्स हो गया, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर हो गया। अब DRS डोमेन रूट सर्वर उसको बोलते हैं, ठीक है, डोमेन रूट सर्वर्स बोलते हैं। कुकी स्टोर सर्वर डेटा, क्लाउड स्टोर सर्वर डेटा। देखिए कुकी भी एक ही होता है एंड क्लाउड भी एक ही होता है, क्लाउड सर्वर डेटा होता है। दिस इज ए नेम ऑफ द डोमेन नेम सर्वर, इट इज ए stand for DNS domain name server, DRS stands for domain root server, and cookie and cloud store server data. तो this is and session time between session login and session logout. तो this is a 4 things of the DNS domain name server, domain name space, DRS domain root servers. तो everywhere discussion HTTP is part of the session, part of the cloud, part of the cookie, ठीक है। तो HTTP I have discussed, तो and with this is a common name of the www worldwide area, worldwide websites and browser, website run browser and display data. Google Chrome is example of browser. Oracle port number 80 and Tomcat server port number 80. URL uniform resource locations. Flow control DLL, फ्लो कंट्रोल के नाम बोल रहे थे। फ्लो कंट्रोल तो होता है टाइप में 3, लेकिन कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो डेटा लिंक लेयर में है, ट्रांसपोर्ट लेयर में है, डेटा ट्रांसफर ऑपरेटिंग, तो लॉगिन में इंटर स्टार्ट सर्वर, लॉगआउट में आउट सर्वर, कंटेंट वीडियो ऑडियो PDF, ठीक है। एंड अनदर पॉइंट ऑफ द 200 first breaks, and I have discussed, this is a very important point of the 269. देखिए क्लास ए तो नेट आई डी 0 to 127 एंड क्लास बी तो नेट आई डी 128 to 91 and first and class A took over 7 minus 18 and house took over 14, and class B is a took over 16 minus 2 and took over 16, and class C took over 14 and took over 8 host, and class D तो net ID 2022 to 40 and class E 41 to 1255 subnet supernet. तो दिस इज ए ऑल पार्ट ऑफ द डिस्कस IP एड्रेस, ठीक है, IP एड्रेस, दिस इज ए IP एड्रेस क्लास ए क्लास बी क्लास सी। तो दिस इज नॉट कंफ्यूज, टुडे इज ए राइट नेट ID host ID, and this is a range of the 127 range, and range 28 to 191, 191 to 223, 223 is a 240, and 241 120. This is a D, this is a D, this is a D, this is a E, and this is identifications of 0 1 1 3 bar 1. This is a 2 के power this is 2 to power 16 and 2 के power 124 minus 2 and 128. दिस इज ए क्लास ई, दिस इज ए क्लास ई, ठीक है। एंड देन आफ्टर डिस्कशंस, हाँ, तो दिस इज ए क्लास है, क्लास बी क्लास सी, दिस इज ए सबनेट सुपरनेट, दिस इज ए सबनेट सुपरनेट। तो दिस इज ए सबनेट सुपरनेट। देखिए सबनेट, देखिए फर्स्ट नेट आईडी and host, तो 2 layer, but subnet is a 3 layer. Subnet net ID, host ID, subnet ID and host ID.
hop. So this is a three layer package, three layer, and this is a two layer. ठीक है. And another ones of the very important all. ठीक है. Discuss of the discussion Supernet private IP address. Private IP address starting of the zero. ठीक है. This is a starting of the zero. 128.192. So this is a ping and public IP address. So private IP address everywhere of the is a public address. ठीक है. हाँ. And TCP MP तो इंटरनेट कंट्रोल फुल फॉर्म TCMP तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल. DBA डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस. पैकेट डेटाग्राम द सोर्स डेस्टिनेशन कंट्रोल पैकेज. एंड एरर डिटेक्टर टू एरर कंट्रोल मतलब दिस इज ए हैमिंग कोड. UDP फुल फॉर्म तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. IPv6 128 बोले ही थे वर्जन 6. IP32 वर्जन 4. फ्रेगमेंट फाइल ट्रांसफर इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है. IoT इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट लैंग्वेज जावा या दिस इज browser Netflix browser a static page server dynamic page. This is an important point. A static page browser is a dynamic means this is an important point. This is a Google Chrome, so this is a static, but click hyperlink, click submit, so then after the page welcome to, so this is a dynamic page. This is a dynamic page and hyperlink open page to page header h1 to h2 h3 XML is also used. Then after discuss is a discuss XML and HTML तो open source language. DBMS internet wide data manage. Margin 4 type flow control data type. Google browser web browser. Google Yahoo search engine. Email electronic mail and Harry Page founder of the Apple. Android तो founder Google 2.5 billion app. Sundar Pichai Google internet to device. This is process of downloading device to internet. This is called of the upload internet. ठीक है. मतलब कोई भी हम डिवाइस से अपलोड करते हैं फोटो तो उसको अपलोड प्रोसेस बोलते हैं, बट हम इंटरनेट से हम डिवाइस में डालते हैं उसको डाउनलोडिंग प्रोसेस बोलते हैं. तो दिस इज SMTP. ठीक है. ईमेल जो हम भेजते हैं गूगल जैसे जीमेल होता है तो उसी को बोलते हैं. ठीक है. ये सब समझने की नहीं चीज़ है. फिर आ जाइए टोपोलॉजी इज ए मॉडल और अरेंज डिवाइस ऑफ नेटवर्क. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द रिंग्स स्टार. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ टोपोलॉजी. मॉडल लॉगिन एंड डी modulator decimal IP. This is a decimal IP. Then after binary IP address, this is a binary. HTML hypertext markup language. CSS property name. A script JavaScript. HTML5 the predefined frame. This is a hyperlink. This is a part of the HTML. Okay, you will discuss. DBA look back address. LBA का stand for look back address. DHCP is name 0.0.0.00. Default
mask class A to 2.5.0.0.0.0 and class B of the default sub mask to 255.255.0.0 and default mask class C 2.55 2.55 2.55.0 code word. देखिए कोड वर्ड डेटा प्लस पैरिटी बिट इक्वल टू कोड वर्ड डेटा प्लस चेकसम इक्वल टू कोड वर्ड एंड डेटा प्लस दिस इज ए error control. This is a first parity bit. This is a parity bit is a very important roles of the error control. Error control are the two error control. Error control is a two type error error detector and error कलेक्शंस. ठीक है. एरर डिटेक्टर ये वाइडेंस बोलते हैं, वाइडेंस भी बोल सकते हैं इसको. आई डिटेक्टर इज ए थ्री पार्ट पैरिटी एंड पैरिटी बोलते हैं एंड RC जनरेटर एंड checksum. So this is a parity CRC generator. This is a error check senders and receivers. This is match 26. This is a 26. So no error detector. Every 2 points is a every parity properties. This is a properties. This is a zero. तो two different. तो error detector 2. ठीक है. means hiding. This is a hiding data means a very important role. Okay. And another one of the error checksum. So checksum have the properties of the 5 sender and receiver is a 5, but this is a might hot 16 18 4 4 5 8. So this is a add and this is a checkpoint. This is a checkpoint 46. This is a receiver side 56. So this is a different 46 and 50. So this is a 46 66 5. This is a trick and 199. So 99 plus 1. So this is a trick of the finding. Then after 4 point having code, then after having code checksum के बाद CRC. तो CRC generators there have the reminder 6466 cut 427 107 reminder and host. Okay, so no problem. CRC find either sender and receiver match. This is a match either 0. So this is a ठीक है. And then after I will discussion is error control. Okay, error control and director control. Okay. You will see code word. This is a Hamming code is a detector Hamming code. अब TCP header I will discuss TCP. So you cannot bet. Okay, so TCP 20 to 60 byte TCP header, UGP urgent segment, URG full form, SYG FINC 1 byte एंड हेलमेन इज ए 4 byte. यह हेडर लेंथ बोलते हैं इसको. ठीक है. TCP डिस्कशन दिस वीडियो एंड चेकसम TCP यस UDP नो, फ्लो कंट्रोल TCP यस UDP नो, error control TCP yes UDP no, ICMP TCP no UDP no, and topology name mesh and star and boss. ठीक है. तो देखिए टोपोलॉजी मीन्स है रीअरेंजमेंट ऑफ द डेटा. ठीक है. दिस इज ए बस. तो बस आर्किटेक्चर्स इज दिस इज ए बस रिंग
Ring is a process and switch. Centric. Okay, no problem. Discuss. Signal to noise. सिग्नल टू नॉइस तो नॉइस को बोलते हैं. पीआर नेटवर्क सेगमेंट रेडियो ऑडियो. क्लाइंट अरेंज सी नेटवर्क. देखिए फिजिकल लेयर स्ट्रीम ओवर कम्युनिकेशन चैनल ट्रांसफर. डेटा लिंक लेयर एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल फ्रेमिंग एंड सर्वर स्टोरेज. नेटवर्क लेयर इज ए नेटवर्क लेयर. तो नेटवर्क लेयर इज ए फ्रैगमेंट कंजेंशन कंट्रोल राउटिंग. ठीक है. ट्रांसपोर्ट लेयर तो इंड टू इंड into reliable connection established ट्रांसपोर्ट लेयर में. सेशन लेयर established sessions management and control and maintaining. ये है दिस इज ए फिजिकल लेयर. तो नहीं प्रेजेंटेशन लेयर तो डेटा इंक्रिप्शंस डेटा कम्युनिकेशन डेटा. तो देखिए दिस इज ए प्रेजेंटेशन लेयर. VPN इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स एंड VPN and fire security device and network device. I will discuss security, and this is a security. तो security, this is the original message to hidden message. This is the process of encryption and hidden message to original message. This process is in decryptions. This is a help of the key. Message 010 or key is 010. This is operations and result of the hidden message. Hatch 0 hatch. Yeah, this is a hello word of the programs. This is a results and then after the. So this process is encryption and this process is a decryptions. And this is a help of the key. तो key is symmetric key. तो both key is a same but asymmetric key. तो this is a symmetry and what is a public key and private key. तो public key this is original message to key. तो this is a hidden to key या message. तो this is a hidden and this is a original message. And another point, firewall security device FTP. ठीक है. This is a network address translations. NTS file system bridge router independent. This is a independent. Bridge or router is a independent. ICMP internet control message protocol analog signal demodulations में analog system X.25 तो DT DES RS23 VDR video card AGP. Okay, today thank you. मतलब everywhere this is a very important of the computer network. This video will soon have the 10 time. A small point to is a remind to you help of the computer network. मैं आप लोग को श्योर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो मिनिमम 2 बार जरूर देखें. आपको बहुत सारा पॉइंट कंप्यूटर नेटवर्क का एक हेल्प मिलेगा समझने में. और मैं अगला वीडियो आऊँगा. रेवोल्यूशन PhD NIT पटना. थैंक यू वॉचिंग द वीडियो.